Good morning, good evening, students. Welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the foundation class, that is law. काली हमें स्टार्ट करथिलु इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किछि पोर्शन हमें ऑलरेडी देखि सारछु मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स जोडा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भितरे आसीबो माने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जिंसो सहित रिवॉल्व हिगी थिबो से जिंस हमें ऑलरेडी देखि सारछु नाउ वी विल बी सीइंग द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ठीक अछि तो बेसिक रिवीजन कॉन्ट्रैक्ट माने कोन a particular agreement जोड़ा कि legal scope भितर को पड़ा आछि ताको हमें कहछु कोन contract ओके बट a proposal और promise माने कोन proposal और promise माने कोन होइथिली गुटे पर्सन आ जण को ऑफर दबो and the other person accept करबो the whole scenario is known as a promise or proposal ठीक अछि agreement माने कोन agreement माने promise or different set of promises forming consideration for each other माने total जिंस जहाँ भी होची each and every party involved काम कागो कौन ओडे consideration थिबो आगा सेटा होची कोन हमरो agreement ओके ए agreement को जितळ हमें legal support दोचु that will be converted into a contract ओके एतिकी जिंस हमें काल जे पढथिलु एबे हमें देखिबा essential elements of a valid contract very important topic ठीक अछि ये पर्टिकुलर टॉपिक रो गुटे क्वेश्चन आसीबाडा बाध्य एवरी पर्टिकुलर सिनेरियो रे माने सीएमए फाउंडेशन हो इंटरमीडिएट हो ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट रो तब क्वेश्चन जिमते लेले देखियो मिलो तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वैलिडिटी माने कोन व्हाट्स एक्चुअली अ वैलिडिटी मे बी गुटे टाइम फ्रेम भितरे आमे माने नॉर्मल सेंस रे वैलिडिटी माने कोन गुटे टाइम फ्रेम भितरे बट वैलिडिटी माने कोन सेटा एक्चुअली इंप्लाइड ना नाही माने सेटा वर्तमान को माने एक्टिवेटेड अछि ना नाही माने ओके अछि ना नाही ठीक अछि ना नाही चलछि ना नाही जहां भी हम कहि परियो तो लॉ कहूची गुटे कॉन्ट्रैक्ट को मो वैलिड माने मते सेटा एक्सेप्टेबल लेली केबल होय परी ना ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स थिले आगे मु कहि परि ठीक अछि से एलिमेंट्स कोन देखो ए पॉइंटटा all agreements are contracts if they are made by free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void एटा होची गुटे लॉ रो पर्टिकुलर प्रोविजन ओके तो से कोची प्रति एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हे पारिबो केतळे हे पारियो से किछि पॉइंट्स कहला कोन पॉइंट्स कहला ना मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज माने कोन both party agree थिबे गुटे जिंस को सेम पर्टिकुलर माइंडसेट रे सेडा फर्स्ट पॉइंट कंपिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट माने से माने के ले इनएलिजिबल नथिबे समस्त एलिजिबल थिबे कॉन्ट्रैक्ट को फॉर अ लॉफुल कंसीडरेशन माने दिजन जाको जो कंसीडरेशन थिबो सेडा लॉफुल हेइथिबो मनन से कहयो म तते कार देबी बट तू मते पैसा दे ना गुट लोक कोइ ताकू मार दे जाई रे एले एडा केबेले लॉ रिकॉग्नाइज करिबोनी बिकॉज़ दिस इज एन unlawful consideration बुझी पला ना नहीं तो सेकंड पॉइंट रहला हमरो lawful consideration and with a lawful object माने टोटल कॉन्ट्रैक्ट ता गुटे ऑब्जेक्टिव पा हेथिबो से पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव जोड़ा अछि सेडा मध्ये कोन लीगल थिबार अछि लॉफुल थिबार अछि इल्लीगल नथिबार अछि देन not expressly declared to be void माने ए जिंसला तमे आगर भी पढिबो लाइक फॉर द चैप्टर रो भितर हमें जेतलो जिबो तमे पर्टिकुलर पॉइंटटा पढिबो जतरा हमें देखिबा कोन किछि गुटे जिंस अछि जोडा कि लॉ टोटली मना कर दोछि डायरेक्टली कि ए जिंसटा सब बळ पे void माने केबे लेली मो एक्सेप्ट करिबिनी कहि से भितर को सेडा आसु नथिबार अछि तो लॉ हमको ए प्रोविजन देला कोन देला फर्स्ट थिंग होछि फ्री कंसेंट दिजन जारो इक्वल माइंडसेट रहिबा दरकार lawful consideration टा कोन illegal हे नथिबार अछि थर्ड थिंग होछि lawful object the objective should be lawful legal illegal हे नथिबार अछि and fourth thing is not expressly declared to be void okay बुझला समस्तंगो एटा खाली म प्रोविजन ओवरऑल कहली हमें इन डिटेल पढिबा सेटा को म इलैबोरेट करछि देखो एसेंशियल एलिमेंट्स रे फर्स्ट होछि हमर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस offer and acceptance रे हम ऑलरेडी पढथिले ऑफर माने कोन व्हाट्स एन ऑफर माने प्रपोजल तो पर्टिकुलर जिंस हमें कोन करछु ताको बुझौछु आ ताको कोन एक्सेप्ट करू रा नै पचारिया पे गोटे जिंसडा ताको हमें इलैबोरेट करछु
तो ऑफर माने देयर मस्ट बी अ क्लियर ऑफर बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाय द अदर माने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कोन टोटली साइमल्टेनियस थिबार अछि और दीडा पार्टी थ्रू रु आसीबार अछि एडा रहला फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट होची इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप माने both parties must intend to create a legally binding agreement माने दिजन जगर इंटेंशन थिबार अछि कोन गोटे लीगल टर्म्स को एंटर करिया पई से कहियो मु जहा भी कहि बट मु कॉन्ट्रैक्ट साइन करि परिनी मु एग्रीमेंट करि परिनी तो आमे लॉ रे सेडा रिकॉग्नाइज करि परिबोनु बिकॉज़ लॉ कोन कहूची गोटे पर्टिकुलर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट को आनिया पे हम कोन करि रछि ताको लीगल टर्म्स भितर को आनिबाडा निहाती दरकार तो से कहूची कोन the both parties must intend to create a legally binding agreement माने लॉ ताको रिकॉग्नाइज करछि लॉ चाहिले ताको पनिश करि परियो लॉ चाहिले ताको रिवॉर्ड भी करि परियो तो लीगल टर्म्स भीतर को एंटर हेबार इंटेंशन रहिबार अछि ओके दिस इज द सेकंड पॉइंट लॉफुल कंसीडरेशन समथिंग ऑफ वैल्यू मस्ट बी एक्सचेंज्ड एंड इट मस्ट बी लीगल देखो दीडा कीवर्ड्स कहूची मोडी जोड़ा एक्सचेंज होची जो कंसीडरेशन एक्सचेंज होची तार किछ ना किछ वैल्यू रहिबा दरकार किछ ना किछ वैल्यू रहिबा दरकार आउ सेडा कोन लीगल हेथिबा दरकार मनर ए अछि से किछि सर्विसेज प्रोवाइड करला बी को ओके सर्विसेज बी ताको कोन देला ना किछि गोटे रेयर करेंसी देला किछि गोटे कंपनी कंट्री रो रेयर करेंसी देला तो से रेयर करेंसी जहां भी अछि से जतलो पर सेडा फाइंड आउट करला तो से देखला कोन सेडार किछि भी एबे वैल्यू नै सेडा खाली गोटे हिसाब रे रखिया कथा इलीगल जिंस से देनी इलीगल जिंस से देनी बट एडार जेहेतु वैल्यू नै तो सेडा गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भीतर को आसी परिबोनी बिकॉज़ से दीडा जिंस हम कहले देखो गोटे होची वैल्यू रहया दरकार आ गोटे होची लीगली सेडा से दबा दरकार मनर सेकंड एग्जांपल रे ये ताको सर्विसेज प्रोवाइड करला ये स्मगलिंग करके गोटे जिंस कोन हला गोटे आनी की देला गोटे डायमंड की गोटे रेयर प्रेशियस जेमटा आनी की देला प्रेशियस जेम रो बहुत वैल्यू बट सेडा लीगली से आनीनी कि लीगली देनी इलीगल हेला तो एडा मध्य कोन गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर करि परिबोनी कोन पे एंटर करि परिबोनी ना बिकॉज़ वैल्यू थिले इलीगल हेगिरि अछि किबा इलीगल नथिले वैल्यू नै दीडा जे जिंस साइमल्टेनियसली प्रेजेंट थिले आगा सेडा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर हेई पारिबो बुझि पाला एवरीवन क्लियर बुझिला ओके फाइन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट माने कोन पार्टीज मस्ट बी लीगली कैपेबल तांकर कैपेबिलिटी रहया दरकार माने लॉ कोची मेजर हिथिबा दरकार मेजर माने 18 प्लस साउंड माइंड मुंडो काम दोथिया दरकार नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ तमे पढिबो तार फर्दर सेक्शन अछि माने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट टोटल गोटे सेक्शन अछि लॉफुल कंसीडरेशन रो टोटल गोटे सेक्शन अछि तो यू विल बी स्टडीइंग इन डिटेल परे बट से कहूची लॉ कहूची कोन मेजर से माने बेसिकली से गोटे मेजर हिथिबा दरकार साउंड माइंड रो हिथिबा दरकार माने कैपेबल ऑफ मेकिंग सम डिसीजंस थर्ड थिंग होची नॉट डिस्क्वालिफाइड माने से गोटे माने इम्प्रिजन हेई नथिबो कि कोड रो गोटे आसी नथियो कि एनिमी हेई नथियो एनिमी कंट्री रो आसी नथियो तो लॉ डिस्क्वालिफाई किंदी न करूथिबो से पर्सन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट अली कोई हम कहि परबा माने ही हैज द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओके फ्री consent must be given freely without coercion fraud undue influence or mistake ए जार गुटे गुटे सेक्शन अछि कोर्शन माने जोर जबरदस्ती करिकी कार माने येडा में आनिबानी माने कार कंसेंट आनिबानी ता पूरा जबरदस्ती करिकी गोटे एग्रीमेंट भीतर को हम एंटर करेबानी फ्रॉड तो बुझुचो किछि गोटे ता से फ्रॉड करिके हम एंटर करि परियनी अनड्यू इन्फ्लुएंस माने गोटे पर्टिकुलर पर्सन सुपीरियर पोजीशन रे अछि आ गोटे पर्सन तार जूनियर हेगिरी अछि माने ता अंडर रे काम करछि तो जे सुपीरियर जे अछि से सबले ताको कंट्रोल करथिबो जूनियर को तो से सुपीरियर कोन तो सुपीरियरिटी देखेगी जबरदस्ती करिकी गोटे कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करे पारिबोनी लास्ट थिंग होछि मिस्टेक एडार इन डिटेल तमे बुझिबो ओके तापर मो बेसिक आईडिया तमो दोछि क्वेश्चन रहला कोन जोर जबरदस्ती करिकी फ्रॉड माने कोन किछि गोटे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करिकी एपट सेपट करिकी ताकू से न जानि कि हमें ये कर देबा लाइक एंटर कर देबा अनड्यू इन्फ्लुएंस माने हम जूनियर को हमें कोन करिया गोटे सुपीरियरिटी देखैकी जबरदस्ती रे हमें आन देबा मिस्टेक माने तमे भी जाननो बट भूल रे एंटर करै देलो
ओके किछि भी जिंस हो फ्री कंसेंट माने त निज इच्छा रे से जदी एंटर करूनी तो सेडा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड केबे भी हेई पारिबोनी ओके lawful object the purpose of the contract माने purpose of the contract must be legal and not against public policy legal रहितबा दरकार पब्लिक पॉलिसी को अगेंस्ट न रहितबा दरकार नंबर 1 लीगल माने कोन lawful not against public policy माने वेरी गुड सोसाइटी रूल्स को अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट न रहुथिबा दरकार ओके then agreement not expressly declared void माने the agreement must not fall under contracts declared void by law माने जो एग्रीमेंट अछि सेटा कोन लॉ ने डायरेक्टली किछि एग्रीमेंट्स को मना करछि कि एमती एमती जिंस हेई परिबन जोटा कि हम फर्दर पढिबा तो से एग्रीमेंट भितरे एडा एंटर न होतिबार अछि consensus ad idem माने एडा होछि इंपोर्टेंट both parties must agree on the same thing in the same sense मु काली कहउथिली दीडा फर्नीचर अछि गुटे पार्टी से रूम कोन करला देखिला फाइनल कर देला हेले से कोन से फर्नीचर पे कॉन्ट्रैक्ट करछि एक्चुअली माने से भाबछि से फर्नीचर पे से बड़ फर्नीचर पे से कॉन्ट्रैक्ट करछि बट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हेछि सान फर्नीचर पे तो इवन इफ द ऑब्जेक्टिव इज द फर्नीचर जेहेतु दीडा जाक कोन अलगा अलगा जिंस पर्पस टा पूरा चेंज हे जोछि सेति पे कोन हमर एडा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भीतर को केबे एंटर हिचेले हमें कहि परिबानी बुझि पालो ना नहीं ए अछि बी अछि तो एडी गोटे साधारण फर्नीचर अछि एडा गोटे बड़ फर्नीचर अछि तो ए बी भितरे कोन एग्रीमेंट हला कि ए परचेज करिवो बी रु फर्नीचर टा 2000 रुपीस रे 2000 रुपीस रे हेले से सानो फर्नीचर बिसरे कहउथिला बी बट ए कोन भाबिची बड़ फर्नीचर अनि भाबिची तो नेक्स्ट डे जेतोळ तांको जणा पडला तो कॉन्ट्रैक्ट कोन हेला कैंसिल हेला किबा सेडा वैलिड आगा नथिला इनवैलिड थिला बुझि पालो कोन पे नै ना बिकॉज़ both parties did not agree on the same thing in the same sense due to the lack of consensus ad idem it's a latin term है ना तो मैं देखिबो एडा बारंबार पचर थाउची एग्जाम रे consensus ad idem माने same thing in the same sense okay तापरे certainty the terms of the contract must be clear and definite terms of the contract must be clear and definite मनर x and y अछनी ओके तो x गुटे घर बिकुची y सेडा सेल करिया लाइक y सेडा परचेज करिया को चाहूच ओके x ताको बिकिबो से कहला मो घरटा 3 crores रो वैल्यू ओके बट मु तते 3 lakhs रे देई दी केबे जानछु ना गुटे तूफान आसीबो तापरे 3 दिन कंटीन्यूअसली खरा आसीबो तापरे नेक्स्ट दिन आथरे 5 दिन वर्षा हबो जदी एतिके टर्म्स जेतळ को हेला जदी एतिके सब जेतळ हे जिया ना ए नेक्स्ट डे आगो मु तते बिकि दी 3 लाख रे 3 कोटी रे प्रॉपर्टी टा मु तते 3 लाख रे बिकि दी भाई पूरा उल्ला आलिया पूरा खुशी हला हला सीएले खुशी है कोन करला ठीक अछि ले कहि से एंटर कर देला जेतळ को लीगल टर्म्स को एडा लाइक देखिले गुटे लीगल ऑफिसर जेतळ देखिला से कहला एडा केबे एले गुटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हे पारिबोनी काई हे पारियोनी कोन कहले क्लाइमेट टा महत्तर नहीं तो दिस इज अनसर्टेन को फैक्टर नहीं ना एडा डेफिनेट अछि ना एलिमेंट्स जा भी अछि सेडा क्लियर अछि तो जेहेतु अनसर्टेन अछि अनसर्टेन फैक्टर्स गुडा को इन्वॉल्व हेगी अछि तो एडा सबोळा पई गुटे इनवैलिड एलिमेंट आगा रहला एंड इट कैन नॉट बी एंटर्ड इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बुझि पालो possibility of performance the contract must be capable of being performed हला से कहिला कोन ए अछि बी अछि ए कहला मु तते 3 लाख रुपीस देबी 1 kg ऑफ राइस को 1 kg ऑफ राइस को बट कोन मते 1 मंथ रे पूरा फ्रेश हार्वेस्ट दरकार 1 मंथ रे माने आगरो हिथिया दरकार नहीं मते 1 मंथ रे आगा तू बन्नै गिरी दबो हार्वेस्ट तू कोन करछु को टेक्नोलॉजी यूज करछु करे बाकी 1 मंथ रे आगा मते पूरा फ्रेश हार्वेस्ट आनी की दबो सेडा केबे हे पारिबो की हे पारियोनी इट्स इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस केबे हे पारिबो कैपेबिलिटी तो नहीं से जदी कहि थांदा तू फ्रेश टा दे केबे लेले सेडा तू प्रोड्यूस करि पारिबो बाकी 1 मंथ पर मते दे तो मे भी सेडा हे थांदा बट से कोन कोची से 1 मंथ रे आगे मते तो कोन बनै की दबो तो सेडा कोन फ्राइड राइस ना बिरयानी
बुझी पालो ना नहीं? तो दिस इज इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। तो एडा मध्ये गोटे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भितरे एंटर हेई पारिबोनी। Required legal procedures like writing, registration or stamp duty must be followed. एतिकी तो जानचो। Obviously contract है लाड़को agreement टा contract convert है लाड़को किछि stamp मारिबे किछि जणकर signatures नेबे procedure किछि थिबो आमे writing करबा registration वगैरह करेबा जा लागि कि ताके कोन legal support टा मिलि जिवो legal backup टा मिलि जिवो ह ना नै। तो बुझिला समस्तंगु टिके देखंतो एतिकी ए 10 points। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किछि डाउट्स अछि पचारि पारिए। बुझुछि समस्तंगु? रेस्पोंड इन द ग्रुप। ओके ओके ओके। तो मैंने बुझिला किछि डाउट अछि कार देखो एते जई लॉफुल कंसिडरेशन कहथिली। लॉफुल कंसिडरेशन माने होछि कोन? कंसिडरेशन माने बुझुछो व्हाट यू आर गेटिंग इन रिटर्न। माने जदि ए बी पे किछि सर्विसेज देला तो से किछि ना किछि प्रॉमिस करथिबो ना 10,000 देबो कि 15,000 देबो कि 20,000 देबो सेटा थिबो। दैट इज कंसिडरेशन। ए पे कंसिडरेशन रहला माने ए जदि बी को सर्विसेज प्रोवाइड करूची सर्विसेज प्रोवाइड करूची तो बी ताकू पैसा दबो। ओके तो ए पे कंसिडरेशन रहला 15,000 बी पे कंसिडरेशन रहला कोन सर्विसेज एडा कंसिडरेशन। तो ए जो कंसिडरेशन जगह अछि मनर से सर्विसेज प्रोवाइड करला परे के काउ सर्विसेज प्रोवाइड करला ए बी को सर्विसेज प्रोवाइड करला तो बी ताकू कोन कहला बी ए को कहला कि मु ता बदल रे हां ए ताकू कहला कोन तू मते सर्विसेज प्रोवाइड करलु तो सर्विसेज रो बदल रे मु का गुडे जाई मार देबी मु तते पैसा दे पारिनी जा पर राग अछि मु ता बाडे दी कि मार दी कि कोन एले ओटे। ओके पैसा तो मात्र मु दे पारिनी तू केबे जाऊ को मु ताकू जाई बाडे दी काई गेले मु गुडे बडो डॉन नॉट डॉन एक्चुअली छोटा वाला डॉन हला गोटे सान साइज डॉन ना तो मु पैसा दे पारिनी बाडे दी पिट दी मार दी। ओके तो एडा गोटे इलीगल कंसिडरेशन इट्स नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। से किछि गोटे दोउची म्यूचुअल प्रॉमिस अछि म्यूचुअल बेनिफिट अछि बट इट्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ बिकॉज इट इज अ नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। बुझि पालो? एग्जांपल बहुत फनी है वाला बट आई डोंट हैव एनी ऑप्शन हैला। अनलॉफुल कंसिडरेशन रे एग्जांपल्स कोन हे परिबो एनीवन? अनलॉफुल कंसिडरेशन किछि हे परियो बस देख लो मो पारे पैसा नहीं फ्रॉड करी आनी दे दी। हाँ हेलो एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट नहीं ओके बुझिला समस्तंगो नो डाउट्स? मैम ओके ऑफर और प्रपोजल माने कोन देखो नेक्स्ट इट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नो नीड टू एक्चुअली रिमेंबर द सेक्शंस मु खाली देइछि कोन पे टिके आखी जेतळ को बुले दबो तो मे बी मनर किछि क्वेश्चन पड़ा आसला इंस्टीट्यूट को जदी बेसी बुलेयार अछि क्वेश्चन तो सेमती प्रकार दे दोछि 100% जहाँ भी क्वेश्चंस अच्छे सब जगह हमको मटेरियल रे इंक्लूड करे अच्छे दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन द सेक्शन नंबर्स नो नीड ऑफ गेटिंग एनी एंजाइटी रिगार्डिंग दिस। ओके तो ऑफर और प्रपोजल आछि हमरो सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन ए भितरे। ऑफर और प्रपोजल माने कोन? when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtain the other's assent it is called a प्रपोजल और ऑफर। माने एडा मु कहूनी एडा लॉ रो लैंग्वेज टा से कोन कहूची जानचो ना गुटे पर्सन जेतळ को आ गुटे पर्सन रो विलिंगनेस चाहूची किबा अनविलिंगनेस चाहूची तू विलिंगनेस दबो लाइक तू हां कहूचु ना कहूचु को जिंस को टू डू or to abstain from doing something माने गुटे जिंस करिया पे किबा न करिया पे do or abstain from doing something
with a view to obtain the others assent माने आउ जनगर कोन हां कि नाही से कोन करिवो obtain करिया पय जदी किछि गोटे प्रपोजल दोची that is known as a offer बुझी पालो तो कोच एडी अछि देखो तार सिंपल लैंग्वेज रे गोटे पर्सन को जेतळो हमें पचारछु कि ए जिंसडा मु करिया चाहूछि तो हां कहूछु कि नाही कहूछु that is an offer in simple terms सेडा ल इमिति पूरा बुले की कहला से कहला कोन willingness कि unwillingness कुछ जिंस करिया पई कि न करिया पई सेने कहूछ ओके बेला हमें कहि एते कथा नै रे हां ना नाही क जे कोनो से वाला मीनिंग एडी अछि offer is when one person expresses readiness to do or not do something expecting the other person to agree हैला एडा होची गुटे offer and it's the first step in forming a contract तो एडा रहला तमरो पेट क्वेश्चन जो आस्थिला dash is the first step in forming a contract it's an offer तो offer is the first step in forming a contract बुझिला अर्पिता एबे कोन कहला सी ना गोटे पर्सन तार एक्सप्रेस करछि कोन रेडीनेस टू डू माने तते इच्छा अछि कि नाही रेडीनेस टू डू और नॉट डू समथिंग एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू अग्री जेतोळ को ए पर्सन ऑफर जे दोछि से कोन सबुला एक्सपेक्ट करियो कि से नाही कहियो कहिगिरी ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कोन करिवो ऑफर टा एक्सेप्ट हो कहिगिरी बुझि पाला ना नहीं केते केते लाइक बहुत सेविंग्स वाला लोक थिबे जे कहिए खाली पचार दथे खाइयो जिया तापरे मन न भाबती अरे नाइ कहि दो एडा वाला ऑफर नै एडा बुझि पाला ना नहीं तो सी कहूँ जनरली गोटे ऑफरर जे भी रहउची से सबले कोन से सबले अज्यूम करछि कि द अदर पर्सन विल एक्सेप्ट द ऑफर ओके ऑफरर और प्रपोजर माने पर्सन हु मेक्स द ऑफर ऑफरी माने पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड ओके मो एग्जांपल मध्ये देछेडी रिया टेल्स अमन I will sell you my handmade painting for ₹2000. Riya is the offerer. She makes the proposal. Aman is the offeree. He can accept or reject it. So this is a valid offer. बुझी पाला ना नहीं? Valid offer. Acceptance रा कथा से कोई नहीं. कहीं हम खाली offer जे आगा एडी बुझाई छी. तापरे रिया से handmade painting नेला ना नहीं हमें जानी नहीं. वो आज तक किसी को पता नहीं चल. Okay. तो रिया इज द ऑफरर तो ऑफरर सबले कोन करिवो दे विल मेक द प्रपोजल बट ऑफरी हैज द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट ठीक अछि वैलिड ऑफर माने कोन हम पर भी टर्म्स अछि देखिबा वैलिड ऑफर माने एडा गोटे जिंस जोडा कि वैलिड ऑफर से ताको गोटे जिंस कहला सेटा सर्टेन अछि आ से जिंस पूरा ताको बुझा पड़े ओके खाली एति कि जिंस मन रखो ऑफरर और ऑफरर माने जे करूची ऑफरी माने जा गुसी ऑफर टा दोछ okay important rules offer must be communicated the offeree must know about the offer for it to be valid हला एडा गोटे important point माने जेतोल को हमें ऑफर दोछु सेडा वैलिड आले हमें केतोल कहि परिया ना when the offer is clearly communicated to the offeree एडी अमन जी अछि रिया जी अछि से अमन को कोन clearly कहिला अमन सेडा clearly बुझिला that's why it is known as a valid offer बुझी पालो ना नहीं तो एग्जांपल ए कैन नॉट एक्सेप्ट एन ऑफर ही डज नॉट नो इट एक्जिस्ट्स मनर किछि गोटे ऑफर चलची हला बरमपुर रे केते जगह रे केते ना ऑफर जा चलथिबो बट सेडा हम पई वैलिड ऑफर नै बिकॉज़ वी एक्चुअली डोंट नो अबाउट इट बुझी पालो ना नहीं जतला हम जानि देबा तो सेडा वैलिड ऑफर हम जदि जानि मानी तो हम पई सेडा केबेले वैलिड ऑफर नै बिकॉज़ हमको सेडा केबेले कम्युनिकेट हे एति क्लियर offer must show intention to create legal relationship बुझी पालो माने से ऑफर मध्ये किछले इलीगल टर्म्स रहयार नै लीगल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करिया पई किछ ना किछ इंटेंशन बिल्ड अप हेथिया दरकार the offer must be made with the intent to form a legal contract not just social promises okay कोन इंटेंशन थिबार अछि लीगल रिलेशनशिप को एंटर करिया पई for example a promise to take a friend for a lunch is not a valid offer बुझी पाला ना नहीं लॉ सेडा को केबेले गोटा वैलिड ऑफर कंसीडर करि परियन काहेकि जदि न नेले से केस कर दोगी बुझी पाला ना नहीं हे पारिबोगी दैट्स जस्ट अ सोशल प्रॉमिस so there is a basic difference between a social promise and a valid offer किबा लीगल कॉन्ट्रैक्ट बुझी पाला माने जो ऑफर जो होची सेडा सबले गोटे लीगल कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करियार इंटेंशन रे हेबा दरकार बुझी पाला
ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट माने जो ऑफर टर्म्स अच्छी सेटा पूरा क्लियर रहर अछि एंड नॉन कंफ्यूजिंग रहर अछि कि अनकंफ्यूजिंग रहर अछि नॉट वेग माने कंफ्यूजन रहिबार नै सबले सेटा क्लियर रहया दरकार I'll sell you some apples is vague. I'll sell 5 apples for rupees 100 is valid. माने कोई मोटी के किछि गोटे एप्पल बिक्री कोले सेटा कोन द टर्म्स आर नॉट क्लियर केते एप्पल बिकी केते टंका पे बिकी किछि भी क्लियर नै दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर but I'll sell 5 apples for rupees 100 is valid काहेकि the terms are certain here बुझि पालो offer must not contain a term that acceptance will be assumed if not rejected देखो this is an important point जोडा लगी question रे exam रे questions आसुछ question रे exam आसुछ fine silence cannot be treated as acceptance saying if you don't reply in 3 days I'll assume you accepted is not valid ठीक अछि से कोची से ताको किछि गोटे ऑफर देला ओके माने मनर गोटे जिंसडी अछि कोन हले गोटे गोटे टेबल ओके सम सॉर्ट ऑफ कोन कहउचंदी जो ओल्ड जमाना वाला गोटे टेबल डे अछि जोडा की 6000 ओके सेटा ऑफर देला ए बी को ओके ए बी को कोन देला ऑफर देला से ताको जतलो को जनेला कहला कि जदी तू 3 डेज भितरे कोन मते कि तू एडा परचेज करू कि परचेज करू तो आई विल अज्यूम दैट यू एक्सेप्टेड इट मो जबरदस्ती सेडा पठे दी तो घर आसी मो फोन पे रे स्कैन करी 6000 टा नै मो अज्यूम करी सेडा 3 दिन भितर जो तो रिप्लाई करलुनु तो भाबी दी तू आ कष्ट पड़ना मो निजे भाबी दी कोन कि तू एक्सेप्ट कर दे टेबल डा ओके दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर बुझी पालो लॉ केबे भी एडा को गोटे वैलिड ऑफर ट्रीट करिवनी माने से कहउची ऑफर मस्ट नॉट कंटेन अ टर्म दैट एक्सेप्टेंस विल बी अज्यूम्ड इफ नॉट रिजेक्टेड माने से इमिति नै कि से 3 दिन भितर ताको रिजेक्ट करनी आली कहले सेटा एक्सेप्ट हे जेची कहिगिरी माने से रिजेक्शन ना देनी कहि कि एक्सेप्टेंस हे अला कहि कि अज्यूम करि पारिमोनी आई होप इट्स क्लियर से इंट्रोवर्ट भी तो हे परियो बुझी पालो ना नहीं तो इंट्रोवर्ट मानक पे ये प्रोविजन टा देछि ल कोन हला हां एग्जैक्टली रिचार्ज भी सर जाई पारे इंट्रोवर्ट भी हे पारे हला भितर भितर से कांदी पकियो पर मु केणी पाने से खराब भाबियो पुराली से केते स्ट्रगल करथियो तो लॉ तापे गोटे प्रोविजन आनला कोन कि acceptance will be assumed if it is acceptance will not be assumed if it is not rejected माने से जदी रिजेक्ट करूनी त हम अज्यूम करि पारियानी कि इट्स assumed to be accepted कहिगे ओके बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट किछि किछि क्वेश्चन मध्ये आसी एग्जाम रे केबे केबे ओके एंड द सेकंड थिंग इज ऑफर मे बी जनरल और स्पेसिफिक जनरल ऑफर कोन स्पेसिफिक ऑफर कोन माने जनरल ऑफर माने कोन जनरल ऑफर माने ना मेड टू पब्लिक एट अ लार्ज माने पूरा होल वर्ल्ड पे जो हमर होर्डिंग्स लागी थाउची 5% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट स्टार्ट थाउची अवश्य केबेल से मिलेओनी स्टार्ट थाउची ना मिलेबोनी कोन कहले टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई तो जेतोळ को हमर होर्डिंग्स रे ही थाउची जोडा समस्त पढी पारछने समस्त जोडा अवेल करि परिबे सेडा होचे पूरा जनरल ऑफर स्पेसिफिक ऑफर माने कोन गोटे स्पेसिफिक पर्सन को दियाबो specific person or group of persons specific persons किमा group of persons को जतोळ गोटे ऑफर दिया होची that is a specific offer बुझि पाला तो गोटे जदी इमिति क्वेश्चन तुमको आसीबो तुमको गोटे जिंस ऑफर दिया हिथिबो सेडा जनरल ना स्पेसिफिक कहया पड़े बुझि पाला आ गुथरे इमिति क्वेश्चन जो आसीथिला से कहिथिला कोन ना जनरली जो एंट्रिंग टाइम रे कूपन डा समस्त दिया गोटे गोटे पर्टिकुलर कोन होउथिला कि गोटे कोन कहउचदी हां मेला टाइप रो इवेंट टाइप रो कोन होउथिला कोन लॉटरी नहीं हां से लॉटरी रा गोटे क्वेश्चन थिला मेला की इवेंट होउथिला सेथरे एंटर करले फर्स्ट 10 पार्टिसिपेंट्स को किछि गिफ्ट मिलेबो पुनी ता परे कोन गोटे लॉटरी टिकट मिलेबो एति एति परचेज करले तो एग्जाम रे पचारथिला कोन ना एडा जनरल ऑफर ना स्पेसिफिक ऑफर एक्चुअली से जनरल एंड स्पेसिफिक बोथ हबो आंसर कोन पे पूरा से ऑफर तो समस्त को देइथिला बट बाकी सेडी गल्ला पर से गोटे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को टारगेट करला ना नहीं कि एति की 3 की एति की परचेजेस पर यू विल बी गेटिंग अ लॉटरी टिकट कहिगिरी
तो एमिति टाइप ऑफ क्वेश्चंस तमे एग्जाम रे देखिबा को मिलबो ओके जनरल एंड स्पेसिफिक बोथ ऑफ द ऑप्शंस हबो सेड बोथ ऑफ द ओके तो जनरल ऑफर माने समस्त को जोड़ा मिलुची स्पेसिफिक ऑफर माने गोटे टारगेटेड ग्रुप ऑफ पर्सन किबा टारगेटेड पर्सन्स को जोड़ा दियाउच ओके बुझिले समस्त को ऑफर मस्ट बी मेड विथ द इंटेंशन ऑफ गेटिंग कंसेंट हैला तो कहले कोन नॉल नहीं कहले होबन okay there must be a willingness to be bound once the offer is accepted a joke is not a valid offer रागी लिखि देछि मोटे a joke is not a valid offer हेले से कहयो कोन आइसक्रीम खाओ कहला हां मु मजाक करथली मु कोन को धरी पळी तो एडा गोटे वैलिड ऑफर केबे भी हेई पारिबनी से कहूची कोन इंटेंशन ऑफ गेटिंग द कंसेंट कोन हला सिंपल है हला सेडा सिंपल टर्म्स रे मु बेसी कॉम्प्लिकेट करेन माने देखो से कहूची गोटे इंटेंशन माने कंसेंट ता आसीबार इंटेंशन रे कंसेंट ता ऑब्टेन करिया इंटेंशन रे ऑफर ता करबा दरकार आ से ऑफर ता दे दो हैला एति की सब होर्डिंग्स वगैरह दे दबो तळे किछि गोटे फोन नंबर दे दो से फोन केबेले लागु नथियो एडा कोन वैलिड ऑफर की even if it's a general offer this is not a valid offer because they are not having the intention to obtain the consent माने सेमानंगर हां कि नै से सुनियार ताको इंटेंशन इंटरेस्ट देडा जा नै नले इंदी धोत्रे फोन नंबर दे नथा ओके फाइन ऑफर मस्ट नॉट बी इलीगल और इम्पॉसिबल एडा तो सिंपल जिंस इलीगल भी होई नथियार अछि इम्पॉसिबल भी हेई नथियार अछि काहे कि सेडा सब्जेक्ट हेई परिबन ऑफरिंग टू स्मगल गुड्स इज नॉट अ वैलिड ऑफर ओके इलीगल नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं हाँ एडा टिके important offer can be revoked before acceptance an offer can be withdrawn revoke माने कोन withdrawn revoked is the law language for withdrawing माने revoke माने withdrawing any time before it is accepted माने A offers to sell his phone but cancels before B accepts तो it's a valid revocation मनर A B को कोटे कोन मोबाइल हाँ ए टाइप रो कोन मोबाइल सॉर्ट ऑफ थिंग मोबाइल से बिकिबा को कोन ऑफर करला एट केते 15000 ओके की फोन कोएले फोन हेथिया भाई एते कोन सी निजे कैंसिल कर देबे काई एते दोच थिबा ता पारे फोन ए को फोन करी पचारिया हला ए ऑफर करला बी को कोन 15000 रे तो फोन टा बिकियो कहि से मैसेज कोला व्हाट्सएप रे बट 5 मिनट पर से देखि लगी भाई एते दिन रे फोन टा अछि किन छाड़ दी मु छाड़ पारिन तापर कोन कला डिलीट फॉर एवरीवन कर देला से देखिया करे ओके तो सेडा कोन बी देखिनी मेसेज टा बी खाली देखला नोटिफिकेशन रे कोनडा आछि से खुल्ला बे तो ये कोन डिलीट फॉर एवरीवन कर देला तापर बी पचरला कोन पठेतला ना किछि नै रे इंडिया बडे पढैतला तो फॉरवर्ड हेतला मेसेज टा ओके तो इन द लॉ भी कोन कहू छै हम भी डिलीट फॉर एवरीवन करि परिबा ओनली बिफोर एक्सेप्टेंस जैसे मैसेज देखि दो हला ताको कहियो पड़े डिलीट फॉर एवरीवन बोले हबगी हबनी तो ऑफर केतळु करी वर्क हे परिबो ना बिफोर इट इज एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी ओके ऑफरी जदी वंस एक्सेप्ट कर दोस तो सेडा केबे भी रिवोक हे परिबोनी एडा मध्ये एग्जाम रे क्वेश्चन आसुछ ओके तापरे इफ देयर आर एनी स्पेशल कंडीशंस they must be communicated along with the offer example writing terms on the back of a ticket without telling the buyer is not valid हला से कोटे जिंसडे किनला हला मनर घर अछि घर नै घर तो बहुत सिंपल एग्जांपल हेला किछि गोटे जिंस से किनला ता सहित से भाबिछि हां फोन भी अछि फोन केते जगह रे कोन चार्जर दउ नांदे एबे ऑनलाइन रे भी तमे देखुछो तमे ध्यान से देखियो देन ओनली से तळे मेंशन हेतिबो एक टर्म्स रे चार्जर दो नथिबो तो सेडा कोन बायर को नॉर्मली जेतोळे से बिकुची से पैसा नेबा आगरे ताको इन्फॉर्म करिया दरकार काहे कि जनरल टर्म्स रे मोबाइल से तो चार्जर ता दो चंदी आगा बट जेहेतु से दोनी इट्स अ स्पेशल कंडीशन तो से स्पेशल कंडीशन ना कोन ऑफर को क्लियरली कम्युनिकेट करिवा दरकार से जानिथिले भलो बट से जदी पैसा दे दोची माने ऑफर ता कंप्लीट करिवा को चाहूची then you must be clearly communicating the special conditions normal conditions नथले मध्य special conditions must be clearly communicated okay किछि डाउट्स एते जई देखो ना
ऑनलाइन स्टूडेंट्स किछि डाउट्स अछि कार? काउ को पॉइंट देखो। डाउट्स नहीं किछि? हियर देखो टाइप्स ऑफ ऑफर हम ऑलरेडी डिस्कस कर छु। जनरल ऑफर माने कोन? मेड टू पब्लिक एट अ लार्ज, कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन हु फुलफिल्स द कंडीशन. ओके. A posts a reward rupees 5,000 for anyone who finds my lost dog. Anyone who finds the dog can claim the reward. Even dog has some value. ହେଲା तो से कौन कहूची ए रो कुकुर हजिला से न्यूज पेपर रे ऐड देला कि व्हाट्सएप रे ऐड देला कोन कि मो कुकुर आई मीन मो लॉस्ट डॉग जा भी अच्छी सेरा जे फाइंड आउट कर दोची ताको 5,000 रुपीस रिवॉर्ड मिलो. I feel the dog is very lucky. Nice. Extremely lucky. मो मम पापा एते खुची एते एफर्ट्स लगेनी हो जाओ. ओके तो एटा कोन जे भी डॉग को फाइंड आउट करची दे कैन एक्चुअली क्लेम रुपीस 5,000 खुजिया क्लास पर. Specific offer made to specific person or group and only they can accept it. Specific group of persons को अगा हेच मनर A offers to sell his bike to B for rupees 20,000. Only B can accept the offer. मनर A B को कहूची 20,000 ना रे मु बाइक टा देदी तू खाली नहीं जा कि गोटे पछन रे आसला मु देदी मु 22,000 दी मते दे से कहयो तू के हु आर यू आई एम गिविंग द ऑफर ओनली टू B. तो ओनली B कैन accept it. मीडिएटर है क्या दैट्स डिफरेंट माने ग्रुप ऑफ पर्सन्स को पळास चेडी एडी खाली स्पेसिफिक पर्सन रे एग्जांपल डेडा मनर बी किबा बी रो चिन्ह से जदी कहला ए कि बी को कहला किबा बी रो केले चिन्ह को कहला कि जीएलएल भी मु देई दी तो देन एनीवन कैन डू इट. सेडा स्पेसिफिक ऑफर अगर बी रो चिन्ह कहला माने सेडा भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हे होची ना नॉट एवरीवन लाइक केएलएल कहला बी को जे चिन्ह ताकुआ देएली कहला दैट्स अ स्पेसिफिक ऑफर. जदि ए बी कही था तो गोटे एडवर्टाइजमेंट लगा कि मु बाइक टा बिकी दउचे एते पैसा दैट्स अ जनरल ऑफर. काहे से एडवर्टाइजमेंट टा लगेओ कहिछ नॉट एग्जैक्टली टू बी माने कहा गोले से बिकी दाओ रेडी अछि दैट्स अ जनरल ऑफर. डिफरेंस बुझिना. काउंटर ऑफर देखो when offeree modifies the original offer it becomes a new offer किमा काउंटर ऑफर. A offers to sell a pen for rupees 100. B says I'll pay rupees 80. B's reply is a counter offer and not acceptance. जो हमें bargaining कहूनो bargaining को ये कहूची कौन काउंटर ऑफर बुझी पालो माने से 100 रुपीस को ऑफर देला ये कहला कौन ये उल्टा तक ऑफर दोची कौन मु तते 20 टका डिस्काउंट काटी 80 टका दे हला तू मते कौन पे डिस्काउंट दो मुआ नै जी हला आई विल गिव यू 80 रुपीस. दिस इज अ काउंटर ऑफर. ओके तापर क्रॉस ऑफर two parties make identical offers to each other at the same time without knowledge of the other offer. बुझी पाले माने आइडेंटिकल ऑफर कले सेटा को कोच कोन क्रॉस ऑफर. एग्जांपल A mails an offer to sell his car to B. At the same time B mails an offer to buy A's car. No contract is formed as there is no acceptance, only cross offer. बुझी पाला माने दिजन जरा नॉलेज न थे कि मेल कर दे चंदी बुझी पाला ये कौन मेल कला से सेल करियो बी को कार एट द सेम टाइम बी कौन ऑफर कला ताको ए रो कार ये करिवो कहि तो क्रॉस ऑफर एट ए टाइम हेई पारिबोनी इमती देखिले तो से क्रॉस ऑफर कैंसिल करिकि गुटे फ्रेश एग्रीमेंट हबो जथरे कि तांके कथा हेकरी एंटर करिवे. ओके क्रॉस ऑफर्स केबेले हेई पारिबन में एडा ऑफर को ऑफर हेला एक्सेप्टेंस हेलानी सी भी जदी कहि थांदा कोन अछि हेले हां मु किनी भी एली कहिथिले अलगा कथा बुझी पाल ना सी ऑफर देला ताको तो क्रॉस ऑफर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस से माने कोन मिसेई गोटे फ्रेश ऑफर बने. ओके
तापर देखो ओपनिंग स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर ए जाक तुमको अल्टरनेट नेम्स पचारे माने ओपनिंग ऑफर ओपन ऑफर इज आल्सो नोन एज व्हाट हैला स्टैंडिंग ऑफर इज आल्सो नोन एज व्हाट से जा पचारे तो मु अल्टरनेट नेम्स दे दीची an offer that remains open for a certain period usually for ongoing deals or tenders एडा कोचा में open offer limited period sale जो कहउछंदी summer sale जो कहउछंदी winter sale कहउछंदी हैला कोन दिवाली सेल भी कहउछंदी सावित्री सेल भी कहउछंदी okay a company offers to supply cement to B anytime during the next month at rupees 350 per bag this is a standing or open offer until accepted with an order तो से कौन कहला नेक्स्ट मंथ जे जे कहछि माने टेन्यूर जो पळा आछि एडी टेन्यूर से टेन्यूर एलिमेंट ता पळा आसिला हमें आपको कहया कोन ओपन स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर ओके एटा देखो खाली ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर माने होची a proposal made with the intention to be bound once accepted बुझि पालो invitation to offer माने invitation to others to make an offer माने कोन देखो एग्जांपल a shopkeeper displaying goods with a price tag is an invitation to offer you approaching the shopkeeper and offering to buy is an बुझि पालो माने मनर से गोटे प्राइस टैग टी रखिछि नो बार्गेन एरा किछि भी नै खाली गोटे प्राइस टैग टी रखिछि तो जेतलो तमे जाय कि कहयो कि एते एते पैसा रेडा हेई पारिबो कि तो दैट्स एन ऑफर बट जो प्राइस टैग तो जो बाहर से अटेस्ट करछि दैट इज एन इनविटेशन टू ऑफर बुझि पालो किंबा टेंडर पय जो लेखुचंदी टेंडर करिया पय कॉन्ट्रैक्ट जो होची टेंडर्स पय बिड्स इनविटेशन करचंदी केते एती तमे बिडिंग करि पारिबो कहि दैट्स एन इनविटेशन टू ऑफर जो कॉन्ट्रैक्टर्स आसी की बिडिंग करथा होचंदी दैट इज देयर ऑफर्स माने जो 5 लाख जो 6 लाख 10 लाख जो कहउचंदी तापर गोटे सेल ऑक्शन की बिडिंग कंप्लीट होची दैट इज एन ऑफर बट जो इनविटेशन करचंदी दैट इज नोन एज इनविटेशन टू ओके तो एडा रहला हमर आज रो कांसेप्ट किछि जदी डाउट्स अछि यू कैन आस्क एडा ही थिला ओके हां टाइप्स ऑफ ऑफर्स देखो किछि डाउट्स अछि जदी समस्त बुझिला तम जण किछि कोन बुझुची पूरा तम जण को ओके ठीक अछि थैंक यू सो मच